this video we will talk about trim formula, why we use it. Actually, we use this formula to normalize all spacing. Let's learn more about this formula with example. First of all, we have to know how much space we have given in this word. For checking this, we use length formula. The full form of this formula is a length Excel function. It is used to count the space between word or cell. I mean between word, not cell. So let's type. Now I am typing this formula according to their syntax. I am giving argument. And one more thing that I forgot to tell you, we use this formula with the help of substitute. With substitute. I mean, as we know, we use this formula substitute, to replace a given text or another text. अगर हमने जिस तरह यहाँ पर स्पेस लिए, हम चाहते हैं कि उस स्पेस की जगह ये हमें नंबर रिप्लेस करके दे, तो जितनी मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दी है ये उतना हमें नंबर रिप्लेस करेंगे. जिस तरह मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए जो फाइंड करनी है. तो अब ये मुझे स्पेस फाइंड करके देंगे. लो, एज यू कैन सी द रिजल्ट इज फ्रंट ऑफ यू 3. यानी इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दी है वो 3 हैं. अब भी मैं इसको ट्रिम करूँगी, मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दी थी इसके अंदर मैं उसको रिमूव करना करूँगी. एंड देन मैं आपको दिखाऊँगी भी दोबारा से वो फार्मूला अप्लाई करके LEN और सब्स्टिट्यूट कि फिर उसके बाद हमें ये क्या रिप्लेस करके देंगे स्पेस की जगह. नाउ आई एम गोइंग टू टाइप अगेन लेन फार्मूला विद सब्स्टिट्यूट. The result is 0, as you can see. It's mean this formula works.